ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਪਲਿਫਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਚੇਂजेस ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। स्वागत करते हैं महीन नुसरत का। महीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू अंकल। थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इंग्लैंड में आप सरी से गए, पहले न्यूयॉर्क से इंग्लैंड क्योंकि शादी हुई, तो अब वहाँ पे हालात कैसे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे सुनते हैं वहाँ पे ब्रेक्सिट की बात चल रही है और वैसे भी कुछ जो अटैक्स वगैरह हुए उसके साथ जो मिनॉरिटीज़ होती हैं वो टारगेट हो जाती हैं। सो व्हाट्स द सिचुएशन देयर इन इंग्लैंड नाउ? So I live in London. Right. Now London के अंदर metropolitan city है. So because of it being a metropolitan city, ये सब कुछ हो रहा है. It's all in the backdrop. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है. ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन आप आम बंदे के साथ जो आप फिरते हैं, जो करते हैं. Now when Brexit happened, London was 60% to stay in. Right. Because it's a metropolitan city, उनका काफ़ी exposure रहा है minorities के साथ भी. So their mindset is a lot different. Right. Whereas आप आउटस्कर्ट्स में चले जाएं, when you go into the countryside, वहाँ पे लोगों का exposure नहीं है, so you are the only brown person or the only Muslim person. Right. So what they get is what they hear on the media. Right. So they buy that. तो उन लोगों की mentality भी वही है. So London में सब कुछ हुआ, हालांकि आपको पता है कितने terror attacks भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है. And one of the most amazing things that happened after जो New West का attack हुआ था, और people started going on Twitter offering their homes. कि if somebody's in this area, अगर आपको रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए, come and stay at our place. Right. Like people have big hearts. And as much as these things are depressing, when I see something like that, I'm like, okay, yeah, humanity में आपका faith restore होता है उसकी वजह से. Right. And you look at that and you're like, okay, that's great. And so as much as I miss home, and I miss home tremendously, but when I see that, I'm like, okay, there, I love that spirit about London. I really love that. कि लोगों के अंदर वो चीज़ है. ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा. अभी Punish a Muslim Day was just 2 days ago. Right. And there's been acid attacks within London. मेरे घर से 20 minutes के रास्ते पर. And it does I walk to work. Right. And it puts a little bit of this pressure on you when you're walking. I'm a visibly Muslim woman. Right. 20 मिनट के रास्ते में कुछ भी हो सकता है. तो डरते डरते जाती हूँ. इफ आई सी समबडी के मुझे लिक्विड किसी के हाथ में नजर आता है, मैं सड़क के दूसरी तरफ चली जाती हूँ. बिकॉज सेफ्टी स्टिल, एंड देयर इज दिस हाइपर सेंस ऑफ बीइंग कॉशियस ऑफ योर सराउंडिंग्स. मैं बड़ी अलूफ सी वैसे रहती हूँ, लेकिन when these things happen, you become very, very hypersensitive to these things. But overall, when we talk, the general population as such, of course, there are bad apples everywhere. Everywhere, yeah. But when we talk about humanity as such, generally हम बात करते हैं कहीं भी कुछ हो तो लोग आते हैं बाहर, सपोर्ट करते हैं, और तब आपको जैसे आपने कहा एक रे ऑफ होप नज़र आती है कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट एंड वी कैन सर्वाइव एज ह्यूमन बीइंग्स. बट ओवर द ईयर्स जैसे ये हालात बिगड़ रहे हैं और जो हालात आगे भी नज़र आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं नज़र आता. मिनॉरिटीज़ जहाँ पे भी हैं वो एक तरह की अब अपने आप को थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि कॉशियस हो रही हैं हर तरफ. तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इज़ सम एफर्ट बीइंग मेड और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जस्ट कीपिंग अलूफ और कीपिंग अ लिटिल बिट बैक? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन. दो चीज़ें हो रही हैं. या तो लोग यही हैं कि नहीं, डोंट डिस्टर्ब द स्टेटस को, खामोशी से रहो, जो हो रहा है उसको होने दो. जी. पीपल आर स्केर्ड, which is also a defense mechanism. Right. ठीक है. लेकिन उसके अलावा आई थिंक यू कैन नॉट जस्ट सिट डाउन. खामोशी से आपके ऊपर कोई चलता चले जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए. आई थिंक यू नीड टू स्टैंड अप. एंड आई एम मोर ऑफ अ फाइटर. तो मुझे मेरा रिस्पॉन्स था कि नहीं जी, मैं तो लड़के अपनी बात एटलीस्ट बोलूँगी. राइट. सो व्हाट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक इज कम्युनिटी इंटरेक्शन. हमें वो चीज़ नहीं भूलनी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मिसट्रस्ट इज getting more so. मतलब आप अगले को किसी को देखते हैं, you become suspicious. Right. By the skin of their color, by their race or by their religion. आप उसकी वजह से आप suspicious automatically हो जाते हैं. Right. First thing is becoming aware. Right. Very first thing is आप अपने आप को खुद, क्योंकि हम दूसरे को control नहीं कर सकते, हम अपने आप को कर सकते हैं. तो for me, it's been a lifelong journey of learning about race relations. Right. About learning about my own biases. I mean, let's look at the Muslim community, for example. Even अपनी जो देसी community है, उनके अंदर देखो, we have a lot of racism towards the black community. Absolutely. Within our own community. ठीक है, जैसी गल कर देने काले अनुए ते काले. We speak in very negative ways. So first step,
you start checking your own biases. Right. And I try to consciously do that. It's not like कि हाँ जी मैं बहुत perfect हो गई मेरे कोई biases नहीं. Right. You that inner voice जब आपका वो निकलती है bias, check it. You're not right. This is not how it works. So you have to take a step back and you sort of have to do that. I think that's the first step. Secondly, we have to engage in community engagement. Right. एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से सीखें. बिल्कुल. Life is a lifelong journey of learning. Absolutely. And every person that comes into your life आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. बिल्कुल. So you have to keep an open mind. Right. आजकल अभी आप अगर देखें तो Facebook के अंदर we engage into a lot of disagreements and all of that. And that's fine. And that's absolutely fine. Absolutely. But at least there's an a discussion. Yes, have an open mind enough right. to listen to the other person's point of opinion. view. Yeah. उसके बाद अगर ठीक है आप बेशक disagree करते हो, right. as long as वो fundamentally आपकी right of existence को नहीं ख़त्म करने की बात कर रहा ना, वो बंदा I have no problem. Right. ठीक है आप you can't change people's point of views, you can't change their belief systems. Right. You can live an example and then you can lead from that. And I think that's what needs to happen. I think there's a lot of organizations that have popped up in the last few years. आजकल US के अंदर आप देख लें, there's the Women's March that happened, the Me Too movement, Time Is Up movement, all of these things are happening. Right. So it's important to read a lot about this thing, hear the point of view. matlab I read a lot. And just not talk, but be a proactive response is required for Absolutely. whatever is happening. Let's go for a short break. We'll be back and talk a little bit more about what all is happening, how we all can involve ourselves, because it's one thing to just talk, but दूसरी बात है कि कैसे वो स्टैंड्स लिया जाए जिसके अंदर हम एक्शन के राही लोगों को साथ में जोड़ के काफला बढ़ाते चलें. इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹੀਨ ਨੁਸਰਤ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕते हैं. अब इसी संबंध में और जानकारी लेने. सो जैसे आपने बात की कि हमें कोई प्रोएक्टिव स्टैंस लेना पड़ेगा, लेकिन जब हम अपनी कम्युनिटीज़ को देखते हैं तो यस जो एक परसेप्शन है कुछ और है, लेकिन हमारी भी जो कमी है हम उसके ऊपर काम शायद ज़्यादा करना नहीं चाहते. और उसके अंदर जो हम अभी भी चाहते हैं कि हम, जैसे आपने कहा कम्युनिटी इंटरेक्शंस की जब बात कर रहे हैं, कितना को हम अपना हैंड एक्सटेंड कर रहे हैं दूसरी तरफ. हम अपने में ही इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि हम समझते हैं कि कोई हमें ज़रूरत ही नहीं कहीं और बाहर जाने की, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो चाहे कनाडा की बात हो. जो ककून्स हम बनाई जा रहे हैं और उन्हीं में हम महफूज समझते हैं. What do you think? How is this going to impact our future generation? I don't think we can survive like that. Okay. Absolutely not. One of the things that I've been very grateful to God and to my parents is that they made the decision to come to Canada. It's Right. the best decision of our lives that has been done in that sense. पाकिस्तान के हम लोग एक छोटे से दिमाग में हम उसी उसमें ग्रो अप कर रहे थे. My father was in the forces, so you grew up hating India, right? ये नहीं सोचते थे कि अगला भी इंसान है. बिल्कुल. So when we moved here, my obviously interactions हमारे स्कूल में सारी हमारे सारे जो हैं अपने Sikh friends ने. Right. So I grew up with that and I was like, oh, and I've always naturally been very curious. So सवाल पूछे ये वो, अच्छा यार हम लोग ज़्यादा similar हैं ना कि not dissimilar. Right. So my group of friends has been this different group of friends, you know, and I'm so grateful for that experience because that has set up the stage कि अब मैं न्यू यॉर्क भी चली गई, जब लंदन भी चली गई, it was like okay ठीक है, and I've gotten an opportunity by living in London to travel to different countries and वो सारा कुछ, तो आपका दिमाग और दिल दोनों खुलते हैं. So I'm really thankful for that. और मेरे घर में कभी अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी पेरेंट्स ने किया नहीं जी तुमने इससे नहीं मिलना उससे नहीं मिलना. Our home has always been this open space. अच्छा अपने दोस्तों को ले आओ, कोई घर पे आए, it has been that way. So for me it was very weird to see, I mean in my group of friends it's not been that as well, but when I moved away to especially in London, वहाँ पे बहुत ज़्यादा cocooning है. Right. And it was really weird for me. यार ये क्या मतलब है, आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप सिर्फ मुसलमान के साथ हैंग आउट कर रहा है, पाकिस्तानी के साथ बंगाली, like that kind of thing. Right. And that was weird to me. And I was like, no, we need to interact a little bit more.
और जब तक हम नहीं करेंगे तो हम नहीं, वो एक डर है. Right. We're lucky we live in metropolitan cities, we live in a multicultural society, we get an opportunity to interact with people. Right. उस काम की अगर आपकी interaction है या उस school से interaction है, take it outside as well, go for a coffee. Absolutely. Extend that hand. And it's scary sometimes, but you have to do it. Take that step if someone else is not doing it. Absolutely. और इसके अंदर तो ये है कि स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, कोई स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इफ्स एंड बट्स हैं किसी के मन में, तो अगर हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो कैसे उनके वो इफ्स एंड बट्स जो माइंड में परसेप्शंस हैं वो चेंज होंगी. अपलिफ्टिंग कनेक्शंस, ये आपने एक संस्था जो है कायम की. वेल, यू हैव बीन अ वेरी वोकल पर्सन सिंस आई नो यू सिंस योर चाइल्डहुड, बट यहाँ पे भी आप कनाडा में भी जब थे तो आप विमेन इश्यूज़ के ऊपर बातें करते थे. ओवरऑल दुनिया में जब हम देखते हैं, और ख़ास तौर पे इन मुल्कों में, जब आम तौर पे तो हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान पिछड़े मुल्क हैं, वहाँ पे औरत को आज़ादी नहीं है, दबाई जाती है, पर इन मुल्कों में भी अब आपको एक्सपीरियंस है स्टेट्स का, कनाडा का, और इंग्लैंड में भी आप रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सोच है? क्योंकि जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो तो यही पॉइंट करते हैं कि women is suppressed here also, whether it is Canada or whether it is India or Pakistan. It takes a different form. Because misogyny and patriarchy sort of is an underlying culture that is global. Right. और हमारी काफ़ी thoughts, हमारी sentences, हमारी अब तो मैं मतलब वही reading पढ़ने से समझ आती है. There are many sentences हम लोग भी बोलते हैं, यार औरत की बात को ना सुना करो. Right. Right? Like we dismiss it. Why? Because we grew up with that. Right. Now, Uplift Connections was a dream. Essentially, हम लोग friends आपस में बात कर रहे थे, wanted to do it, but you know, your life gets into the way. Something like this takes a lot of work के आपको करने के लिए. I had an opportunity where we were like, and my idea, you know, we had an opportunity to do an event. Right. And I said, let's jump on it. And within 3 weeks, we pulled this event. And organization भी तभी साथ ही साथ form हो रही है, सब कुछ सब साथ हो रहा था. And my concept was combining two things. What we talked about earlier about interracial relationships, and the other thing was about women. I have always been a firm believer कि हमें एक दूसरे को हाथ देकर, we have to support each other, we have to uplift each other. Right. And that's where uplift came from, the one part of the name. Right. Connections is because you have to network, you have to meet with each other, and that's where that came from. Right. So the organization's aim is to interact with different races, with business being sort of the center. So we didn't come out with saying, नहीं जी दूसरे मज़हब के और हर मज़हब के लोग और हर race के लोग, we will interact together. The concept was, if you're a woman, you're thinking of starting a business, or you have a business, or what, you know, you are interested in business. Right. Please come along to our events. And it ended up leading to opening doors where we ended up having different ethnicities, different faiths coming together. Right. And what I found so amazing was how many women have started micro businesses, I would call them, because they've started them from home. Okay. And they're running them. Right. Because financial stability or financial independence for a woman, I think, is absolutely must. Right. Because आपके पास एक economic independence होती है तो आप फिर काफ़ी free हो जाते हो. फिर आपको जो दबाने वाला होता है वो भी कम हो जाता है. So when you have that, it opens your mind. So we started in that way. So we have done 3 events to date, where, you know, we started last year on International Women's Day se coincide karte hue. We did our first event. We had speakers, we had activities, and what we did was break down the barriers. So what we were talking about, how do you break down these racial barriers? We did it sort of in a roundabout way, rather than saying, nahi, hum log, we're getting together to break down barriers. Right. We said, no, we're going to get together, we're going to discuss business. But the person across the room, across the table with you, might be white, black, brown, whatever, it didn't matter. Right. And then people came and talked. Okay. And it was such an inspiring event because I heard all these wonderful speakers, I met all these wonderful women. Right. We just provided a platform. Great. Platform provide किया, विमेन लिबरेशन की जो आज बात चलती है, आपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात की, ग्रेट थिंग्स विच विमेन आल्सो हैव द फुल राइट टू बी ऑन दोज ग्राउंड्स, पर उसके साथ साथ जो समाज का फैब्रिक है जिसके अंदर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर हम जब सिर्फ डिपेंड करते हैं तो इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं कई बार वो पीछे चली जाती हैं, और उसकी वजह से शायद आज हम देख रहे हैं, प्रॉबेबली इट इज़ माई परसेप्शन, आई वुड लाइक यू टू क्लैरिफाई दिस आफ्टर दिस ब्रेक, कि क्या उसके साथ सिर्फ इकोनॉमिक सोच जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर रही हमारे दिमागों में, उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट्स, या अपने आप, क्योंकि मैं अपने आप सर्वाइव कर सकता हूँ तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, एक इंडिविजुअलिस्टिक थॉट जो है वो औरतों में ज़्यादा क्या नहीं हो रही, इसके बारे में बात करते हैं इस ब्रेक के बाद.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਨੈਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਾਹੀਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ कुछ चर्चा कर दें। जी माहीन जी, so what do you have to say? So I have a question for you, right? Yeah, okay. आप ये बोल रहे हैं कि अगर औरतें जो हैं सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उस पर चली गई तो इज दैट कॉजिंग डिवोर्स रेट्स और जो भी। आप मुझे ये बताइए, अगर साल से मर्द काम करें, पीपल men have been working, is that the mentality you've had कि नहीं मैं कमा रहा हूँ तो जी मैंने जो है इसको दबा के रखना? No. Then why do you think that the flip is true, right? हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है, I think for years and years and centuries we have been so scared of the power that women might have, that we've tried to suppress it through religion, through culture, through whatever different means that we can, economic being one of them. What has happened? Yes, no doubt divorce rates have gone up, but what is the reason for it? It's not just the economic factor, of course that is a big deal. But one of the reasons divorce rates have gone up is that women have decided, you know what, enough is enough. We are not going to keep putting up with this. We shouldn't have to keep putting up with this. And I don't need you in my life for financial reasons. You are my equal partner. You are there for emotional support. You're there for, sort of that support, jo companionship hoti. That's what you're there for. I am not looking at ji mere ghar mein gaadi aur ye wo iske liye nahi. That's no longer required. So why should we set up a threshold really low? I think it's been a huge disservice to the men of our community कि हमने उनको बोल दिया जी this is it, the bare minimum, that's all you need to meet. As long as you provide, and as long as some of the conversations I have with women, and this is a really really sad reality, and I started thinking about it, I was like, are you kidding me? Women are sitting there, he doesn't hit me, he's not cheating on me, he's a good man. Is this all we should expect of our men? Why should we not expect more of them? हमने अपनी औरतों से we've expected a lot from our women. We expect them to culturally succeed, financially succeed, everything, education, हर चीज़ में we want them to excel. And they have done that. They have proven that. I mean, all of my circle of friends, they are business women, they have been educated, they're managing their families, they're juggling all of that. And doing an immense job of it, a tremendous job of it. So why is it that we've set the bar so low for our men? Why are we not flipping that question on its head and saying, actually, I want you to do this, because I expect better out of you, because I think you're able to do better than this. And I have these conversations with my friends who have kids, and they want that for their sons. They want to raise them in that way, and I think we need to change that. That's wonderful. If this kind of thought is planted in the minds of the youngsters, then definitely जो हम चाहते हैं माशरे में वो change वो automatically आएगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन मनाते हैं, रैलीज़ होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, एक दिन के लिए बहुत दुनिया भर में ये बातें बहुत प्रचलित होती हैं और इसके ऊपर बहुत मीडिया भी आके बातें करता है। लेकिन उसके अंदर हम जो देखते हैं कि वही लोग जो ऑलरेडी सो कॉल्ड, इन कोट्स में कह रहा हूँ, सोशलाइट्स, जो किसी न किसी फील्ड में ऑलरेडी कामयाब हैं, वही आके वहाँ पे तकरीरें देते हैं, सुनने वाले भी वही होते हैं। लेकिन जो मैसेज हैं वो आज भी, चाहे वो इंडिया है या पाकिस्तान है या हम कनाडा की बात कर लें, आज भी जो एक आम औरत है वो उसी तरीके से दबाई जा रही है या पैर की जूती मानी जा रही है, क्योंकि वो सोच जो है, जो आपने बात की, वो चेंज नहीं आ रहा। सो व्हाई इज़ दैट thinking not changing amongst the women also, that we need to percolate this down at the deep level so that the change starts from bottom, not from the top, because the top is already changed. They are well educated, they are well financially, they are well settled, and probably they are controlling their spouses also. So why is it not changing the thought of those women that let's start it from the bottom? So as I said, the example of my friends that are raising their sons now, they're raising them this with a different mentality. Men they're marrying, they're raising, they're marrying men that they can have these conversations with.
My husband and I will argue all the time about different things, and Right. we challenge each other's mentality. When we challenge each other's way of thinking. I'm not saying I'm always right, Of and he's course. not always saying he's right, but we Right. have to be open enough to do that. So I think there is change. I'll give you an example. आजकल मैं अम्मी के साथ आई हूँ तो घर पे बैठ के ड्रामे देख रही होती जी. हूँ पाकिस्तानी. And Pakistani media has gone like बहुत आगे जा चुका है. जी. But still the dramas same उसमें वही narrative same- वही है. वो, right. सास बहू को दबा रही है, बहू सास को दबा रही है. And the बिल्कुल. same thing, बच्ची पैदा होगी तो भाई मसला हो गया. Right. Why? And I Absolutely. think the media needs to changing that as well. We need to Right. stop. I understand that what they're doing is portraying the reality, Right. but what you need to do is have a lesson in there. The lesson should be that this kind of mentality does not survive. Absolutely. Sometimes people do challenge it, but at the same time, वही दिखा रहे हैं कि जी वो वापस उसी उस पे चले जा रहा है. Having these conversations, you know, when I set up this platform, the Uplift Connections platform, where you're talking about socialites, Ji. this is not for just necessarily socialites. I've Right. had, as I said, women who are running a business at their home. They're coming together, they're talking, and we're having these conversations. Right. Make those platforms more accessible. I think social media has made a huge difference. Right. There's a lot of people that have become influencers. So we have iSuperwoman. We have a lot of like Muslim community ke andar, Amina Ken. These are a lot of these women that have come out and they Right. are there. People listen to them. So there's a burden of responsibility. And I think those who have that burden of responsibility also need to be careful what Right. they're saying and how they're Absolutely. saying it. And I also firmly believe this, that you and I as our ordinary people have our own sphere of influence. जी. तो हमारा जो सर्कल है जिसके अंदर हमारी इन्फ्लुएंस है, let's have those conversations And there. absolutely that sphere of influence घर से शुरुआत घर से होती है कि शुरू- घर से ये चेंज शुरू हो ताकि Absolutely. हमारी जनरेशन्स हमें देखें और उससे वो इंस्पायर होके ऑटोमेटिकली इस सोच में आए कि ये औरत नहीं और ये मर्द नहीं, एज ह्यूमन बींग्स हाउ वी कैन Absolutely. डेवलप एंड हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. Maheen, it is a pleasure to talk to you, and Thank you for we are having proud me. that we have daughters like you who always stand for their rights, not only their rights, but you talk on those grounds whereby we all can come together and bring about that change which we want. It was Thank a you so pleasure much. talking to you. Thank you and best Thank you wishes. for having me.